बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा CS का जो 304 है उसका लेक्चर नंबर 6 से 10 तक हम अपने क्विज़ देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दी सेट ऑफ एक्टिविटीज़, मेथड्स, बेस्ट प्रैक्टिस एंड टूल्स यूज्ड टू डेवलप अ सिस्टम इन कलेक्टिवली इज़ कॉल्ड दी। ये हमारे पास वी एस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब जब हम किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए मेथड्स और उसमें टूल्स वगैरह एक्टिविटीज़ सब यूज़ करते हैं, तो वो उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो मेथड हम डेवलप कर रहे हैं ना, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद है एक सेकेंड, इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ द कोर आइडिया बिहाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास बी है, मॉडलिंग अ सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, व्हाट डज UML स्टैंड फॉर, ये हमारे पास सी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। But the UML is a dash language used to visualize, specify, contract and document the artifact of a software system। तो ये हमारे पास B है, मॉडलिंग। ठीक है, तो which UML diagram is used to capture the functional requirements of a system from the user perspective। ये हमारे पास C है, use case diagram। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास किसी भी जो कोई भी सिस्टम होता है ना, तो उसके लिए हमारे पास कोई जो फंक्शनल वगैरह हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास डायग्राम यूज़ हो रही होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास होती है यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, इसके बाद है इन अ यूज केस डायग्राम एंड डैश रिप्रेजेंट्स अ रोल दैट अ यूजर प्ले व्हेन इंटरएक्टिंग विद दिस सिस्टम। ये हमारे पास सी है, एक्टर। मतलब जब एक जो पर्सन है, एक तो हो गया ना पर्सन जिसने यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो यूज़र हो जाएगा। ठीक है, और जिसने वो प्रोग्राम बनाया वो डेवलपर हो जाएगा। ठीक है, और जो उसके साथ बातचीत कर रहा है, उसके साथ एक ताल्लुक बना रहा है सिस्टम के साथ, वो हमारे पास एक्टर हो जाएगा। ठीक है, in a use case diagram, a dash represents a set of actions performed by the system that yield an observable result of the value to a particular actor। ये हमारे पास होगा सी, यूज केस। ठीक है, तो ये सब हमारे पास यूज केस डायग्राम जो है ना, उसमें हमारे पास होता है यूज केस में। The most important diagram in object oriented development is the, तो ये हमारे पास सी है, क्लास डायग्राम। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे क्लास डायग्राम में होती है, बाकी डायग्राम नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अ क्लास डायग्राम ग्राफिकली शोज द डैश एंड डैश ऑफ द क्लासेस इन अ सिस्टम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये हमारे पास बी है, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। यानी जो क्लास डायग्राम है ग्राफिकली, उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर और फिर बिहेवियर, इस तरह से ये चलता है। ठीक है, इन अ क्लास डायग्राम द प्रॉपर्टीज डाटा ऑफ अ क्लास आर रिप्रेजेंटेड एज, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स आएगा। ठीक है, इसके बाद है इन अ क्लास डायग्राम द बिहेवियर्स, फंक्शंस, सर्विसेज ऑफ अ क्लास आर रिप्रेजेंटेड एज, तो ये हमारे पास ऑपरेशंस और मेथड्स हैं। द थ्री सेक्शंस ऑफ अ क्लास बॉक्स इन अ UML क्लास डायग्राम आर टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो क्या हमारे पास है बी, नेम, एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस। UML इज अ डैश स्टैंडर्ड फॉर मॉडलिंग सिस्टम, तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टर एंड अ यूज केस इज टाइपिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल लाइन कॉल्ड एंड, ये सी है, एसोसिएशन। ठीक है, द OOD अप्रोच बीइंग्स बाय फोकसिंग ऑन डैश एंड हाउ दे इंटरेक्ट। ये हमारे पास सी है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम डेवलपमेंट जो है ना, उसमें जो काम सारा ऑब्जेक्ट्स का ही होता है, उनके इंटरेक्शन का होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द सॉफ्टवेयर क्रिसिस रिफर्स टू, तो ये भी है, द डिफ़िकल्टी इन बिल्डिंग लार्ज कम्प्लेक्स रिलायबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, which symbol is used to enclose the name of a class in a UML class diagram। तो ये हमारे पास होती है no special symbol, often bold or centered। ठीक है, the visibility of an attribute or operations in a class, तो ये हमारे पास C है, पब्लिक। ठीक है, the visibility of an attribute or operations in a class diagram is shows by a symbol। what does the symbol, तो ये हमारे पास C है, प्राइवेट। ठीक है, the visibility of an attribute or operations in a class diagram is shown by a symbol। what does the hash symbol denoted, तो ये हमारे पास B होगा, हमारे पास प्रोटेक्टेड।
ठीक है। जो हैश सिंबल है वो मतलब डिनोट किस तरह से होता है, तो वो हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 7 आ गया, विच यूएमएल डायग्राम इज यूज टू इलिस्ट्रेट द इंटरएक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ टाइम ऑर्डर्ड सीक्वेंस। तो ये हमारे पास सी है सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। द यूएमएल डायनामिक मॉडल इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद मॉडलिंग द सिस्टम्स बिहेवियर्स ओवर, तो ये बी है टाइम। इन द सीक्वेंस डायग्राम द वर्टिकल डैश्ड line below an object represents the objects, तो ये हमारे पास बी है लाइफ लाइन। In the sequence diagram, the horizontal arrow between lifelines represents a or into an, हमारे पास सी है मैसेज मेथड का, ठीक है। विच डायग्राम emphasize the structured relationship and arrangement of objects, arrangement of ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, तो ये हमारे पास सी है हमारे पास कोलैबोरेटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास दी थिंक रेगुलर बार प्लेस्ड ऑन अ लाइफ लाइन इन अ सीक्वेंस डायग्राम इज कॉल्ड दी, तो ये हमारे पास सी है एक्टिवेशन फोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद है द डैश इन द सीक्वेंस डायग्राम इंडिकेट्स द पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन either directly or without a subordinate प्रोसीजर, ठीक है। तो ये हमारे पास सी है फोकस ऑफ कंट्रोल। इन a collaborating diagram messages are numbered to show the dash of execution, तो ये बी है हमारे पास सीक्वेंस। the UML dash is a static representation of objects and their links at a particular moment in time, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डायग्राम है। the number next to a line in a class diagram that specific how many instances of one class can related to a single instance of another class is called, तो ये भी multiplicity। in a sequence diagram the order of message is read from, तो ये हमारे पास टॉप टू बॉटम है। the dynamic model helps in understanding how the dash in the static model behave over time, objects or classes which multiplicity indicates that there can be 0 or 1 object, तो मेरे पास सी है 0 to 1, ठीक है। विच यूएमएल डायग्राम इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मैसेज फ्लो विद मैनी नेस्टेड कॉल्स, तो ये हमारे पास बी है सीक्वेंस डायग्राम। इन एन ऑब्जेक्ट डायग्राम ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल विद देयर नेम एंड क्लास नेम, तो हमारे पास ए है अंडरलाइंड, ठीक है। आर डैश रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल लाइन कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स इन द सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास बी है हमारा लिंक एसोसिएशन इंस्टेंस, ठीक है। Collaborating diagrams are sometimes performed because they clearly show the dash among the interacting objects, हमारे पास सी है structural relationship। the primary output of the dynamic modeling phase is a set of interaction diagrams, and ये हमारे पास सी है state and activity models and interaction expressions, तो ऑन आ मैसेज इन कोलैबोरेटिंग, ठीक है। तो ये कोलैबोरेटिंग डायग्राम इंडिकेट्स, ये हमारे पास बी होगा लूपिंग रिपीटिटिव कॉल्स, ठीक है। विच डायनेमिक मॉडल कंपोनेंट explicitly shows the duration of an object's execution, तो हमारे पास सी होगा फोकस ऑन कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है, विच यूएमएल डायग्राम मॉडल्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट चेंज, ठीक है। ओके तो ये हमारे पास सी है हमारे पास
स्टेट चार्ट डायग्राम और स्टेट डायग्राम, ठीक है। इसके बाद अ डैश इज अ कंडीशन और सिचुएशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग विच इट satisfies some conditions, performs some activity or waits for an event। तो ये हमारे पास है सी है, हमारे पास स्टेट यानी हालत। इन a state chart diagram a change from one state to another is called तो ये हमारे पास सी है, ट्रांजिशन, ठीक है। an occurrence that may trigger a change of state a transition is known as तो ये हमारे पास सी है, इवेंट, ठीक है। The initial state of an object is a state chart diagram is represented by a solid circle। The final state यानी termination of an object is a state chart। तो ये हमारे पास भी है, bull's eyes concentric circle, ठीक है। इसके बाद what does a statement diagram primarily focus on the internal behavior of a single object। The dash diagram is best suited for modeling a workflow or a business process focusing on the flow of control। हमारे पास सी है, एक्टिविटी डायग्राम। In an activity diagram, a dash solid bar with one incoming and multiple outgoing transitions represents a single thread of control splitting into multiple concurrent threads। ये भी है fork। In an activity diagram, a dash solid bar with multiple incoming and one outgoing transition is used to synchronize concurrent threads। हमारे पास है भी join। And dash is in a stat chart diagram is an activity that takes place during a transition like calling an operation। तो ये सी है, action। In a stat chart diagram, the condition that must be true for a transition to fire is called a ये सी है, God condition। Activity diagram are very similar to which transitional diagram। हमारे पास भी है, flow chart which activity diagram element represents a conditional branch in the flow of control। तो decision या diamond। The primary purpose of this state chart diagram is to model the dash of an object's attributes change in values or state, ठीक है। In an activity diagram, and dash represents a single or non-interruptible step in a process action state। Which diagram helps in answering the questions what is the sequence of activities that must be followed to complete a task। हमारे पास भी है, एक्टिविटी डायग्राम। A state chart diagram is created for objects whose dash is critical to the system behaviors। ये सी है, हमारे पास स्टेट हिस्ट्री। And dash occurs when a transition leaves a state and enters the same state again। तो हमारे पास बी है, self transition। In activity diagram, dash are used to organize activities by who performs them, actor or system component, ठीक है। तो हमारे पास सी है, हमारे पास सिमलेंस, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है। C++ is often referred to as a dash language because it supports both procedural and object-oriented programming। तो ये हमारे पास C है, hybrid, which operator is used in C++ to access a global variable when a local variable with the same name exists। तो ये हमारे पास C है, scope resolution operator, ठीक है। In C++, memory for variables and objects created and at runtime is allocated using the dash operator। We see है new। The deleted operator is used to the allocated memory that was allocated using। ये हमारे पास C है new, ठीक है। What is the term for defining multiple functions with the same name but different parameter list। तो ये C function overloading। A dash is an alternative name or alias for an existing variable in C++। तो हमारे पास रेफरेंस है।
when a function argument is passed by dash using and the function can modify the value of the actual argument. तो ये हमारे पास रेफरेंस होगा. The dash keyword is used to ensure that a variable parameter or member function cannot be changed. So you see here const a function parameter with a predefined value that can be omitted when the function is called a of n. ये हमारे पास है b default argument. When overloading function, the functions must differ in their ये हमारे पास number or type of parameters हैं. Memory allocated using the new operator reside in the हमारे पास b है heap और free store. What is the entry point for the execution of every C++ program? The main function. If int x is equal to 10 and int and reference है x, then reference is a dash to x. ये हमारे पास ये होगा reference alias. Which operator is used to deallocate an arrays of memory allocated by new be deleted if a function takes an argument as const int and x. The function can be read the value of x efficiency without modifying it. C++ supports dash the ability to treat objects of different classes in an unified way through virtual functions. You see here polymorphism, which type of memory allocation occurs automatically when a function is called and is deallocated when the function returns. तो ये हमारे पास B है automatic allocation. The use of reference in functions arguments passed by reference is often preferred over pointers for. So ये भी है safety and clarity, no null and no resignment. If you use new to allocate memory but forget to use delete, it leads to a problem called हमारे पास C होगी memory leak, which feature of C++ allows the reuse of functions by varying only the parameter types of count. हमारे पास B होगा overloading. इसके बाद हमारे पास विच सेक्शन ऑफ C++. ये 10x से स्टार्ट हो गया. ठीक है. C++ class is typically used to declare data members to support information hiding. तो हमारे पास B होगा प्राइवेट. A special member function that is automatically called when an object is created is the ये हमारे पास C है constructor. A C++ constructor always has the dash as its class. हमारे पास B है same name. A constructor dash have a return type not even void. तो हमारे पास B है must not. The constructor that takes no arguments is called the. तो ये हमारे पास C है default constructor. The special member function that is automatically called when an object goes out of scope or is explicitly deleted is the हमारे पास B है destructor. A destructor name is the same as the class name but is prefixed with तो ये हमारे पास C है tilde. ठीक है. The constructor used to initialize a new object from an existing object of the same class is the ये हमारे पास copy constructor. Which type of copy happens when only the values of data members are copied, leading to two objects sharing the same dynamically allocated memory. तो हमारे पास भी है shallow copy. ठीक है. A dash copies the contents of the dynamically allocated memory, ensuring truly independent objects. तो ये हमारे पास B है deep copy. इसके बाद है a constructor can be dashed to provide different ways of initializing an object. C overloaded. The process of an object being initialized from another object of the same class is handled by the copy constructor in the case of both A and B. यानी function called by value object creation with assignment. ठीक है. If a class does not define a constructor, the compiler provides a implicit default constructor. How many destructors can a class have? हमारे पास B है exactly one. If a class contains pointer data member, it is highly recommended to explicitly define a B destructor and copy constructor rule of 3. ठीक है. Access getters and
Moderators, sitters are public member function used to provide controlled access to the objects. So private data members, which functions is designed to read the value of a private data member without changing it. B हमारे पास assessor, a dash function is designed to change set the value of a private data member muted. ठीक है, if a class does not define a copy constructor, the compiler provides an implicit copy constructor that performs a, ये हमारे पास है b shallow copy, which constructor is typically called when an object is created on the stack without any explicit initialization values. तो ये हमारे पास c है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, ये हमारा था हमारे पास लेक्चर नंबर 6 to 10. तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका. ठीक है, कि चैनल को शेयर लाजमी कर लीजिए, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए. ठीक है, खुदा में याद रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.